open for the questions, and please you can ask any questions related to the dietary fiber. We will try to answer it. Yeah. What do you suggest with respect to so there is some linkage with respect to cancer and dietary fiber? We have seen your slides, but what about the holistic angle? Not only cancer, but what are the other aspects that can be benefited from holistic health point of view in children by increasing or regulating the intake of dietary fiber as such? Apart from addressing the major ailments, from the other aspects of well-being. Yes, apart from diseases. Yeah. End of the day, all the components really are very important. Dietary fiber we have taken because we wanted to create and we wanted to bring attention of the consumer to dietary fiber, but definitely the other aspects of the diet, which was in our first slide, that's the balanced diet. It is very much important, because beyond if you don't take a balanced diet, if you take a skewed diet to let's say a fat rich or a protein rich diet, it is going to impact some of the other body organs. So that's why dietary fiber is very important, and it is not just keeping a sort of meeting the RDA. It is very important that the dietary fiber is being seen like a medicine in our body, because some of the secondary metabolite which this microbes generate after metabolizing the fiber, that means after eating this fiber, some of the metabolite they secrete. Okay, तो वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। वो मेटाबोलाइट्स आपको कोई भी मेडिसिन में नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बच्चों के लिए कि हम उनके डाइट में फाइबर रखें। जैसे आपको पता होगा कि जूसेस में, फ्रूट जूस में बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर होता है, लेकिन अगर वो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए, अगर मान लो आपको जूस आर पार दिखे, तो उसमें फाइबर ऑलरेडी हटा लिया है। जैसे आप व्हीट फ्लावर में अगर आप देखें, व्हीट फ्लावर में, होल व्हीट फ्लावर में अगर जब वो रिफाइन कर देते हैं तो फाइबर हटा देते हैं, तो वो मैदा बन जाता है। उसमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन और बढ़ जाता है बेसिकली होल व्हीट फ्लावर से। लेकिन होल व्हीट या मैदा दोनों में ही ग्लूटेन प्रोटीन है, उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का इशू है जहां पे प्रोटीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। व्हीट का फाइबर बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप आटा खाते हो तो उसमें प्रोटीन भी जाता है, तो वो बहुत लोगों के लिए एलर्जी क्रिएट कर सकता है, जिनको सीलियक डिजीज है या जिनको ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है। तो बेसिकली ये देखा है। और एक और चीज देखा है कि हम लोग अपने बच्चों को कोई भी टाइप के जंक फूड दे देते हैं। अब आप NIN के वेबसाइट में जाइए, गूगल कीजिए, तो NIN नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, तो उनके वेबसाइट में जाइए, उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है कि जंक फूड किसे बोलते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को जंक फूड बोलते हैं। तो वो चीजें आप अपने बच्चों को नहीं दीजिए तो वही बेटर रहेगा। तो that's the way we are trying to educate the things, and the main thing is, at least if, let's say if you are an adult, then at least 40 ग्राम का फाइबर आप देखिए आपके डाइट में प्रतिदिन जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा।